बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल साइंस क्लास 6 की एमसीक्यूज करते हैं जो कि सिटी पीएचडी के लिए बहुत अहम है। जनरल साइंस क्लास 6 की सारे एक्सरसाइजों की एमसीक्यूज लेके आया हो विद सॉल्यूशन। ये वीडियो दो हिस्सों पर डिवाइड है चूँकि इस क्लास की जनरल साइंस में टोटल 12 चैप्टर है। आज की इस वीडियो में हम 6 चैप्टरों की एमसीक्यूज करते हैं। बाकी 6 चैप्टरों की एमसीक्यूज आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे जो कि इस वीडियो की पार्ट 2 है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बिल वाला आइकन प्रेस करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मसल इज अ टाइप ऑफ। नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में मसल किसकी टाइप है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। द करेक्ट वन इज टिश्यू। मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे पास मसल एक किस्म है टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्रांच ऑन अ स्टेम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम। रूट, ब्रांच, शूट, कंडक्टिंग। द करेक्ट वन इज शूट। प्लांट्स के मेन 2 हिस्से हैं। ज़मीन के अंदर वाले हिस्से को हम रूट कहते हैं, ज़मीन से बाहर वाले हिस्से को हम शूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हमारे जिस्म में डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का जिम्मेदारी कौन से सिस्टम की है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। द करेक्ट वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी जस्ट लाइक द कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। मिटोचंड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, रिबोसोम। द करेक्ट वन इज न्यूक्लियस। हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करते हैं जैसा कि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्ट्रूमेंट कैन हेल्प टू सी एमोबिया क्लियरली। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एमोबा को क्लियरली दिखाई देता है? हैंड लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बोथ बी एंड सी। द करेक्ट वन इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम एमोबिया को क्लियरली दिखाई देता है हमें। चैप्टर नंबर 1 समरी, अ सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेंट्रोयल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। Cell membrane is the outermost covering in animal cell. EUGLENA is unicellular organism. Plants prepare food in their chloroplast. Unicellular organism to have just one cell in their body. Multicellular organism to have many cells in their body. Many organs combine and work together to make a system. And many systems combine to make an organism. चैप्टर नंबर 2, सेंस ऑर्गन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुली ड्यू टू। सेंस ऑर्गन, ब्लड, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन। द करेक्ट वन इज सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन 2, इन द ई सेंसरी सेल आर लोकेटेड ऑन।
chloride, sclera, iris, retina. The correct one is retina. Question number 3. The optic nerve behind the retina takes signal to the arm, brain, ear, nose. The correct one is brain. Question number 4. Hearing is helped by optic nerve, auditory nerve, sensory nerve, motor nerve. The correct one is auditory nerve. Question number 5. Which organ is used for testing? Nose, ear, tongue, eye. The correct one is tongue. इस चैप्टर की मेन पॉइंट्स. The E consists of 3 cords: sclerotic, chloride, and retina. The message from the E pass through the optic nerve to the brain. Ear is the organ of hearing and it consists of 3 parts: outer ear, middle ear, and inner ear. The message of sound passes through the auditory nerve to the brain and thus we hear the sound. The sense of touch is located in the skin. Touch cells are connected to the brain by nerves. The sensation of smell is detected by the cell present in the nasal chamber. The tongue contains taste buds which help us to differentiate between different tastes. Receptor cells are present in sense organs. The layer of the E that has sensory cells is called retina. Vibration of the eardrum is due to sound waves. The sensation relating to sour and salty taste are received by receptor cells located on the sides of the tongue. You can smell odorous substance through your nose. We have sense organs which help us to detect change in the environment. Chapter number 3. Photosynthesis and respiration in plants. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, plants make their own food through a process called respiration, photosynthesis, fertilization, pollination. The correct one is photosynthesis. Question number 2. Which of these is not needed in the process of photosynthesis? Sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, oxygen. The correct one is oxygen. Question number 3. The small pores are opening in leaves that take in the carbon dioxide. Stomata, lamina, folium, petrile. The correct one is stomata. Question number 4. The suitable range of temperature for photosynthesis is 5 to 15 degrees centigrade, 15 to
45 degree centigrade, 25 to 35 degree centigrade. The correct one is 25 to 35 degree centigrade. Question number 5. What is given up by the plants during photosynthesis that animal needs? Oxygen, carbon dioxide, chlorophyll, water vapors. The correct one is oxygen. Chapter number 3 की key points. The main source of energy is sunlight. Mesophyll cell contain photosynthesis. Epidermal layer in a leaf contains small pore called stomata. Normal temperature range for photosynthesis is 25 degree centigrade to 35 degree centigrade. During photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. Respiration takes place in all the animals and plants. Respiration is the breakdown of food to release energy. Thank you. चैप्टर नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द अबायोटिक कंपोनेंट्स इन द फॉलोइंग. नीचे दे गई अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है? लायन, एफल, वाटर वेपर्स, बीटल. द करेक्ट वन इज वाटर वेपर्स. वाटर वेपर इज अबायोटिक कंपोनेंट. Question number 2. The relation between two organisms where both are benefited neither is harmed is called predation, parasitism, metabolism. None of these. The correct one is metabolism. Question number 3. Thar is an example of. थर एक डिज़र्ट है जो पाकिस्तान में है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिज़र्ट, aquatic, grassland. The correct one is desert. Thar is an example of desert. Question number 4. Mosquito feeding on human blood an example of. Predation, parasitism, metabolism. None of these. The correct one is parasitism. Question number 5. There are major types of natural environment. Natural environment कितनी types की है? 5, 2, 3 and 4. The correct one is 2. Biotic and abiotic. Key points of chapter number 4. Non-living components of environment are called abiotic components. In environment, plants are regarded as producers. Lion is regarded as a predation in a predator-prey relationship as a predator. One of the example of parasites in human body is tapeworm. Bacteria in the intestine of human being is an example of metabolism. Everything that surrounds us is our environment. Sunlight, temperature, rainfall, water, soil, etc. are the example of abiotic components. Producer, consumer, and decomposer, etc. are biotic components. Chapter number 5. Atoms, molecules, mixture and compounds. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द सिंबल यूज्ड फॉर सोडियम इज. सोडियम के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? एस, एस डी,
Na, N. The correct one is Na. Question number 2. The constituent element of washing soda are. Washing soda किससे बना हुआ है? Carbon and oxygen, sodium and oxygen, sodium and carbon, sodium, carbon and oxygen. The correct one is sodium, carbon and oxygen. Question number 3. Which method is usually used to separate colored substance from each other? कलर को हम एक दूसरे से जुदा करते हैं, वो कौन से मेथड से करते हैं? डिस्टिलेशन से, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी. द करेक्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ दीज इज नॉट अ मिक्सचर? नीचे दी गई 4 ऑप्शन में कौन सा मिक्सचर नहीं है? वाटर, एयर, टी, alloy. The correct one is alloy. Question number 5. The particle left behind on the filter paper in the filtration process are called. इसको हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड में जब डस्ट बाकी हो, filtrate, residue, distillate, none of these. The correct one is residue. Question number 6. Which atom are found in CH4 methane? मीथेन में कौन से एटम पाया जाता है? 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन. द करेक्ट वन इज 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन. Key points of chapter number 5. Atom is the smallest particle of an element that take part in chemical reaction. It may or may not exist free in nature. Symbol is a short name of an element. A molecule are formed by the chemical combination of 2 or more atoms. चैप्टर नंबर 6 ईयर. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ दीज गैसेज इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन ईयर? सबसे ज़्यादा हवा में कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड. द करेक्ट वन इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हवा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर combustion, rusting, respiration, photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 3. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन. कार्बन डाइऑक्साइड किस में इस्तेमाल होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में या फिर फायर एक्सटिंग्विशर, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दिस. इन सब में इस्तेमाल होता है. ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 4. विच इज ट्रू फॉर नाइट्रोजन? नीचे दी गई 4 ऑप्शन में कौन सा नाइट्रोजन के लिए सही है? यूज इज ड्राई आइस, यूज इज अ कॉलेंट, यूज इन रेस्पिरेशन, यूज इन कंबशन. द करेक्ट वन इज यूज इज अ कॉलेंट. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ईयर? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मकदार हवा में कितना % है? The correct one is 0.03% carbon dioxide and 78% oxygen. Question number 6. Inert gases are not used in. नोबल गैसेस किस में इस्तेमाल नहीं होती? इलेक्ट्रिक बल्ब में, साइन बोर्ड, फोटोसिंथेसिस, वेदर बालून. द करेक्ट वन इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में नोबल गैसों की ज़रूरत नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 7. विच गैस इन ईयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस? बर्निंग प्रोसेस में कौन सा गैस ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन. द करेक्ट वन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बर्निंग के लिए ज़रूरी होता है. की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 6. ईयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ. Air contain nitrogen, oxygen, carbon dioxide, inert gases and water vapors.
Air contain 78% nitrogen, 21% oxygen, and 0.03% carbon dioxide, and about 0.9% inert gases. Nitrogen is used as coolant. Oxygen is produced during the process of photosynthesis. Plants absorb carbon dioxide and convert it into glucose. Carbon dioxide is used in fire extinguisher and soft drinks.